Jai Hind students. Today we are going to begin the new chapter of our grammar portion. It is chapter number 15, active and passive voice. So, a very basic question. Do you have any previous knowledge of this chapter? Yes, yes. Before that, I would like to know from all of you. I guess today is the record attendance in my period. Around 50 people are here, excluding me. So, before we directly jump onto this active voice and passive voice, I would like to know, do you know what is a transitive verb and intransitive verb? Because if you do not know, then I don't think so you're going to make a pace with my teaching. What is a transitive verb? Hi, Shruti. What is a transitive verb, Shruti? I have not disabled your mics. Okay, Aditya is following Utkarsh sir formula. He is raising his hand. Actually, I am a little impatient person. So it's okay. You unmute and you say. Until and unless it becomes like a bhindi market, I will never mind. But you, yeah, 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 go. What is a transitive verb? We shall talk about its usage later. But what is a transitive verb? Swati, your camera is so hazy. It feels like there is a lot of snow falling in your room. Snort of snow. Nothing is clear. A ghost is sitting. Like that. I felt like that. So clear the camera. Sanjeet, I give you a chance. I guess, yeah. Let me hear Aditya. Aditya, if you can define it in plain one sentence, so speak. Else, I'll ask someone else. How? What is it? What is it? Huh. All right. So transitive verb is a verb which uses object with itself. Can we speak like this? We can say like that, right? A verb that takes an object with itself is a transitive verb, ma'am. Transitive T takes an object. T for take, it takes an object, so transitive it is. And then intransitive verbs are those verbs which do not require any object to complete its sense, to complete its action. I sleep, you cry, it rains, dog barks. All these actions are quite, like involuntary, without blinking. And even if you're doing, you don't need anything to finish it, to complete it. This much is clear, right? So now let's begin our journey of voice, and uh, let's see what it is and where can we make use of it in our writing and in our speech. So the magician took his hat, he kept it on the table, he pulled out a rabbit, the children clapped loudly. So now, in all these sentences, A, B, C, D, the magician, he are the subjects and doer of every action. In sentence D, the children are the doer of the action and also the subject of the verb clapped. All the above sentences are in the active voice as the subject is the doer of the action. Okay, ठीक है. When the subject of a verb is the doer of an action, the verb is said to be in the active voice. Is this thing clear? Now this is a new concept. है ना? किसी को समझना हो आपसे, तो वो कैसे समझ सकता है? आप सामने वाले को कैसे समझाओगे? See, I drink a glass of milk. So here action is of drinking the glass of milk. But who is doing it? Is the glass consuming the milk on its own? Is it a magician glass? No. I think it is me. It is me who is sipping the milk, right? So I am
drinking milk. I drink a glass of milk. So I am the doer. Doer is somebody who does the action. I do the action. I takes a plural verb. So I do the action. She does take a glass of milk every day. He does take a glass of milk every day. He does drink milk always. He does, she does. Clear है कहाँ do कहाँ does. Is it clear? ये सारी चीजें किताबों में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब आप अपने से सेंटेंसेस बनाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे, आप दिमाग में कुछ सोचेंगे, तो आपका डू डज और डू क्लियर होना चाहिए. दे डू, इट डज, इट डज मेक अ डिफरेंस टू मी, इट डज फील बैड, है ना. और likewise, so what we were talking that when the speaker, the doer of an action is there in the sentence, when the doer itself is doing the action, so that sentence is in active mode. है ना Mr. Swain? With whom are you talking? Now I am going to do an action. I will slap you twice. Two on the left cheeks, two on the right cheek. Then your smile will be dissolved in one glass of hot milk. You add some boost and then you drink it. अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो. चले गए तो दूध पीने ही चले गए. तुम्हें तुम्हें उसका दूध पीना है? हैं? उसको मैं गर्मा गर्म दूध दे रही थी, तुम्हें लेना है उसका दूध? वो तो चला गया, तुम पक 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 कर रहे हो. ऐसे नहीं बोलना है बीच में. उसको मैं डोज दे रही हूँ, तुम्हें अभी दोस्ती यारी निभानी है. चलो ठीक है. सो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? अगर मैं पूछूंगी कि बेटा एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे मुझे? मैम, when in a sentence the doer is doing the action, the doer is performing the action, that sentence is going to be in the active voice, ma'am. If I ask you what is an active voice in a very indirect way, how? Okay, tell me XYZ, that can you identify if this action is in active voice or is this sentence is in passive voice? This is also a way. Are you able what I'm trying to tell and ask? हमें जब नॉलेज मिलती है तो हम उसे बहुत स्टीरियोटाइप करके नहीं लेते हैं. किताब में जो लिखा है हम सीधे बस उसी को रेफर नहीं करेंगे. हमने उससे कॉन्सेप्ट क्या बिल्डअप किया, वही चीज अगर हम किसी तीसरी किताब से पढ़ेंगे तब तो हमारा दिमाग घूम जाएगा और हम शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं. इसलिए जो मेन जो चीजें हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पूछा, है ना. क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर नहीं है तो बच्चा आगे से एक्टिव वॉइस कहाँ से पहचान पाएगा या बना कैसे पाएगा, राइट right? तो अब पैसिव वॉइस क्या होता है? आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया. Why do we need an object in any sentence? Some basic questions. These are very basic questions, but I'm really looking forward to, check if my learners know these things. Because if I keep on teaching, continue teaching the chapter without any knowledge कि मेरे बच्चे का लेवल कहाँ है, उसे तो ये पता ही नहीं, तो वो कनेक्ट कैसे करेगा, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगी. So just like a plain healthy exercise, I'm just doing that way. Yes. So what have I asked? That what is a passive voice? Hey Pushan. Oh, sorry. Yeah. Why do we need an object? So I would listen. I would like this time. I would like. अरे रुको भाई तुम तो हो ही मस्त. तुम अभी चुपचाप बैठो. Trevid, you answer me. आएगा तो बोलेंगे yes ma'am I can answer you. और नहीं आएगा so you may say ma'am I don't think so. I know. लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं. अगर मैं त्रैविध्य हूँ और आप तरन्नुम मैम है और मैं जानना चाहती हूँ मैम व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट मैम, व्हाई डू वी नीड एन ऑब्जेक्ट मैम, तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे? अपनी फुल कैपेसिटी में ऐसा समझिए कि आप मैं हैं, आप मैं हैं, मैं यानी कि यू आर मी. सो हाउ विल यू टैकल दिस क्वेश्चन? बच्चे पूछते हैं ना सवाल. श्रेया आप क्या बताओगे? श्रेया यादव. व्हाई डू वी नीड एन ऑब्जेक्ट?
अरे दिमाग लगाओ, कोई भी बच्चा ये सवाल पूछ सकता है। मैम सीढ़ी ऊपर की तरफ क्यों जाती है मैम? आप लोग के जो सवाल आते हैं ना हिंदी संस्कृत साहित्य में, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं आप लोग, देखा है मैंने। और मैथ में तो आप लोग समाई बांध देते हैं। मजाल है कि मैं इसी क्लास में बैठ के कुछ पढ़ लिख लूं ना, वो वो एकदम फिश मार्केट हो जाता है। वेल या सो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? मंजीत, तुम बहुत अच्छे से ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हो, कुछ पार्टिसिपेट भी करो भाई। अरे रुको यार तुम। मन... हैं जी? अरे तुम लोग चुप नहीं रहोगे क्या? मैं मंजीत से इंटरेक्शन कर रही हूँ, तुम लोग उसी में मन की वीणा बजाए जा रहे हो। काइंडली सिट क्वाइटली, लेट मी इंटरैक्ट। तुम लोग मेरा एक्साइटमेंट समझो। आज 50 बच्चे हैं मेरी क्लास में, मुझे तो लग रहा है मैं कहीं से छलांग ही लगा दूंगी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो आई जस्ट वांट टू इंक्लूड एवरीवन इन माय बलून। इसे भी मैं ले लूं, इसे भी मैं ले लूं, और फिर मैं हॉट एयर बलून की तरह कहीं उड़ जाऊं, है ना, लाइक दैट। या मंजीत, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चे? पर मुझे तो ये समझ नहीं आया, तो मुझे और कैसे समझाओगे? ऑब्जेक्ट का सेंटेंस से क्या कनेक्शन है मैम? इफ यू आर माई मैम एंड इफ आई एम मंजीत, मुझे कैसे आप आंसर करोगे मंजीत? और उसको सिंप्लीफाई करो। रिमूव द ब्रैकेट्स, द करली ब्रैकेट्स, टेक अनदर स्टेप ऑफ algebraic expression. Do you do that in mathematics? You keep solving until it gets simplified to a single term. Yes or no? तो बस, किसी बच्चे का दिमाग अगर ऐसा है कि उसको नहीं पल्ले पड़ रहा, तो आप उसे कैसे और कॉमन शब्दों में कैसे बताएंगे? उठाएंगे गूगल बाबा को और चाप देंगे उसको, और कहेंगे ए मंजीत, तेरा साबुन तो बहुत स्लो है यार, समझ नहीं आ रहा। डू यू डू दैट? हाँ द्रविद, अभी कोई नहीं बोलेगा, फिर क्या बोलेंगे आप? हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ संजीव बताइए। अच्छा, to find what subject is doing. But don't we have words, action verbs? Sorry, not word, action verbs for that. I do watch TV, say Sanjeet. So here, do is, like I'm knowing that the speaker I is doing an action. He's watching a TV, है ना? But then if an action is going on, then it is clear. Then why object? What is the role of an object? थोड़ी और आपकी आपकी कोशिश अच्छी है, आपने 50% तक अटेम्प्ट अच्छा किया है। शिवेंद्र, so can we say that, ma'am, actually basically the role of an object is to complete the demand of any verb, ma'am, a verb which is helpless, helpless to complete its meaning or its action on its own, right? So, ma'am, object comes into action to help those verbs. Ma'am, you know, objects can be of two types, ma'am. Say, if I kill you, ma'am, so you will become dead, you will become table. But if I leave you, ma'am, you will keep teaching us and keep eating our brains. So then you will be indirect object. Yes or no? तो कहानी का सार ये है कि आपको कनेक्ट इसको ऐसे करना है कि मैम ऑब्जेक्ट तो हमारा वर्ब के लिए यूज होता है मैम, लेकिन जब आपकी क्लासेस और कंडेंस होंगी ना, लाइक इन हायर क्लासेस एंड व्हेन द सिलेबस विल बी आल्सो वेरी वास्ट, तो शायद मैं आपको और भी बता सकती कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का ही नहीं होता है, ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन का भी होता है, ऑब्जेक्ट बहुत सारी अदर कैटेगरीज के भी होते हैं,
It is not only verb which always cry help. It is many a times it is other grammatical parts of speech as well. ऑलराइट, तो मैं अब टॉपिक से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी. तो मैं आपको बता रही थी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, इसलिए हमने वर्ब को पहले समझा. राइट, आई थिंक नाउ क्वाइट बेसिक्स हैव बीन डिस्कस. शुड वी डायरेक्टली नाउ जंप ऑन टू द टॉपिक? वेरी गुड. चलो. So, yeah, now a recap in all the above examples. So, read the following sentences. Yeah, but the next question which I was supposed to ask, that what is a passive voice then? So, passive voice is something where the subject is not the doer of the action. Rather, the subject becomes the receiver of the action, right? And the object becomes the subject. अब कुछ clear है? Okay, okay, it's अच्छा भाई, ठीक है, समझ गए, हम दोबारा से प्रयास करेंगे. So, I was saying that in passive voice the subject becomes the object, simple भाषा में, and object becomes the subject. So object becomes the doer of the action and subject becomes the receiver of the action. Is it clear now? अच्छे से क्लियर करिएगा. 100 बार भी पूछेंगे आप तो हम बताएंगे, लेकिन जब मैं पूछूं तो आना चाहिए. तब राधा की तरह और किशन की तरह आप बांसुरी नहीं बजाएंगे. मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम मैम, आई एम इन फ्लाइट मैम, आई एम इन कार मैम, आई एम शूटिंग फॉर सुपरमैन 14. राइट. क्या बात है, अब इसी में तुम लोग शुरू हो गए. मैं तो मजाक में कहा, तुम लोग तो सच में सीरियस हो गए कि मैं 100 बार बताऊंगी. अच्छा चलो ठीक है. इन पैसिव वॉइस a letter is written by me, right? Consider this. It is a very cliche example, बहुत ही redundant, बहुत ही घिसा पिटा देसी शब्दों में. So a letter is, I write a letter is written by me. लेकिन बहुत ही अच्छा सिंपल एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं. So where when I speak I write a letter, in this I is the doer of the action. What is the action going on? Write. I am writing something. What is that? Letter. So letter is the object, definitely direct object, dead object, and task is write. So my voice is not. How much clear should I speak now? ऐसा करिए, आप लोग 5 मिनट के लिए जाइए बाहर, छत पे घूम के आइए, थोड़ा ओरियो बिस्कुट खाइए, और फिर कोई दिक्कत नहीं है. आई विल नॉट माइंड. ठीक है, सबको आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? इससे ज्यादा सुरीला मैं लता मंगेशकर की तरह नहीं गा सकती हूँ. आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी. थैंक यू सो मच. आज मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, 52 बच्चे हो गए, मेरा तो दिन बन गया है ना. सो आई थिंक द पैसिव एंड द एक्टिव इज क्वाइट क्लियर नाउ. कोई ऐसा है जो शर्मा रहा हो कि नहीं नहीं अभी पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो टाइम इज अप? ऐसा नहीं है. एक्टिव वॉइस एक्टिव तब होती है जब सब्जेक्ट ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हो. आई हिट शिवेंद्र. अंकित स्वेन एट द लायन, है ना. लायन एट अंकित. ठीक है. सो अंकित स्वेन एट द लायन, लायन वॉज एटन बाय अंकित. तो यहाँ पे लायन ने अंकित को खा लिया. ये क्या हो गया? पैसिव. ठीक है. चूंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सुनो, दांत बाद में दिखाना, ध्यान से सुनो. यहाँ पे लायन वॉज एटन बाय अंकित में लायन इज ऑल्सो लिविंग. तो यहाँ पे लायन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों? ला डा, हाँ, lion is indirect, no? Lion can breathe. Lion can take oxygen or maybe nitrogen or sulfur. ठीक है, क्लियर है? जिनको मेरी वॉइस नहीं समझ में आ रही है बेटा, वो मेरा वीडियो देख लेंगे और 7 पीरियड में हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे. 5 to 6 minutes to go, so be sincere and attentive. Right, so I believe exercise A now should be taken by all of you. Take a minute and then I'll be telling you the answers or maybe asking you.
Identify if this is an active voice or this is a passive voice. Okay, okay, Ankit. Be patient. Wait for your friends. I will begin with you only. Don't worry. I'm loving your sweater. So next time, kindly change it, huh? Else, I will be a lion and will take away. Not only sweater, but so many things. The flesh also. Okay, so should we get going? It's not that tough. O- Okay. Those who are doing may do. I won't mind, but like I need to cover it up. So yeah, Ankit Swain can answer me the reason also, and the answer also. The king crowned the prince as his successor. Which voice is this, Ankit Swain? Ankit, you just say active or passive. Why? What is the verb? Verb भी highlight करना है. Verb क्या है? Very good. Agree? All of you agree? Okay. Very nice. Now Snehal Nashi. बेटा आप हो यहाँ पे. सेकंड वाला आप ट्राई करो. Your mother teaches science. Active or passive?